Hello children, I am Poonam Bagga welcoming you in your maths class. We are studying chapter 4, Quadratic Equations. We are now familiar with the method of factorization by which we can solve any given quadratic equation. Also, we have completed exercise 4.2 based on this method. Today we are going to learn how to solve a given quadratic equation by the method of completing the square. To understand this method, let us go back to the first two algebraic identities which we already know. The first identity is a plus b whole square. How we expand it? First number square plus second number square, and in between multiply both of them by 2. This is the expansion of this given square. Similarly, we know that a minus b whole square, it is equal to a square, first number square, plus second number square, and in between minus multiply both of them by 2. This is the expansion of this square. Now what if we have this expression in our hand? Then can we go in the reverse way also? अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या हम इससे वापस इस स्क्वायर टर्म पर जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं. देखिए कैसे लिखेंगे हम इसे. यहाँ से लेंगे हम a, यहाँ से लिया हमने सेकेंड नंबर, और क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ भी आएगा प्लस एंड देन होल स्क्वायर. So now we can write this expression in the form of a complete square. Similarly, if we have a square minus 2ab plus b square, तो क्या हम इससे वापस रिवर्स डायरेक्शन में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं. यहाँ से हम लेंगे a द फर्स्ट नंबर, यहाँ से लिया सेकेंड नंबर, और क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ भी आएगा माइनस एंड देन होल स्क्वायर. नाउ वी कैन get this square from this expression. This concept will be used in the method of solving a quadratic equation by completing the square. Let us see how this method works. Let the quadratic equation be ax square plus bx plus c equal to 0, where we know a is not equal to 0. Now there is a sequence of steps. We will take them one by one and then understand that how we can get the roots of a quadratic equation by completing the square. Let us see the first step. Make the coefficient of x square as 1 by dividing the equation throughout by a if a is not equal to 1. अगर दी हुई equation में x square का coefficient 1 नहीं है, कोई और नंबर है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा इस equation को इस coefficient a से डिवाइड करना. और तब हमें क्या मिलेगा? देखिए आप, x square, देखिए a से डिवाइड करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0. गॉट इट? हमने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया है. ये है हमारा फर्स्ट स्टेप. देन मूव टूवर्ड्स द सेकेंड स्टेप. शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू RHS. कांस्टेंट टर्म ये है हमारी, इसे हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर plus b upon ax equal to minus c upon a. Okay, next what? Add square of half of the coefficient of x on both sides. Now this is very important. Let us write that equation once again which we left in step 2. It is x square plus b upon a into x equal to minus c upon a. Now focus on the coefficient of x. It is b upon a. Let me write it here. We will be doing two things with it. First, we will be getting its half. कैसे मिलेगा half? Divided by 2. And then we will be squaring it. इसका square किया तो हमें ये term मिल गई. And now we will be adding this term to both LHS and RHS of this equation. Then what do we get? X square plus b upon a into x plus b upon 2a whole square equal to b upon 2a whole square minus c upon a. हमने ये टर्म LHS में भी ऐड कर दी और RHS में भी ऐड कर दी. Why are we adding it on both sides? You will see that this term was not originally in the equation. ये टर्म इक्वेशन में पहले से नहीं थी. इसे हम अपने मन से लाए हैं, और क्योंकि अब हम इसे अपने मन से लाए हैं तो हमें इसे LHS और RHS दोनों में रखना होगा.
जिससे ये टर्म कैंसिल हो जाए और इक्वेशन का ओरिजिनल फॉर्म अनचेंज्ड रहे. Getting the point here? Now we go to step number 4. Write LHS as the perfect square of a binomial expression and simplify RHS. अब इस LHS से हम एक perfect square ढूंढेंगे और क्या वो हमें मिलेगा, कैसे मिलेगा? Let us see. Just focus on this square term and this square term. Let us write it once again. This is x square and this is b upon 2a whole square. So what we are getting? First number square, second number square, and let us multiply these two numbers by 2 in the center. अगर हम इन दोनों को 2 से multiply करें, then what do we get in the middle? 2 into x into b by 2a. What we see? This 2 and 2 will be cancelled and we will be left with b upon a into x. And this is nothing but this middle term. Just have a look. तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये और कुछ नहीं बल्कि यही एक्सप्रेशन है और ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है. हाउ वी कैन राइट दैट परफेक्ट स्क्वायर? टेक इट x फ्रॉम हियर, टेक b अपॉन 2a फ्रॉम हियर एंड टेक दिस प्लस फ्रॉम हियर. ये प्लस में है तो यहाँ आएगा प्लस. सो नाउ वी हैव x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर. This is just the reverse of the first algebraic identity which we just now discussed. Now this is a complete square as is the name of the method. By completing the square we have to find the roots and we have completed this square. And in the RHS we will be having b square upon 4a square also minus c upon a. b square upon 4a square minus c by a. This is in the RHS. Now I hope this all concept is very much clear to you. Next we will be simplifying the RHS further. X plus b upon 2a whole square and here we will have 4a square as the LCM. In the numerator we have b square और यहाँ पर आप देखिए a तो है हमारे पास, 4 and a we will be multiplying it with c. 4ac. This is the numerator now on simplifying the RHS. Getting the point here? Now we can move towards the next step and it says take square root of both sides. Now this is the equation that we have. We will be finding the square root to remove this square on this expression. तो हम दोनों साइड का square root लेंगे और तब हमें क्या मिलेगा? Let us see. In the LHS we will have x plus b upon 2a. This will be left after taking the square root and in the RHS we will have b square minus 4ac upon 4a square and its square root. But here we will be taking both the values positive and negative. How? Let us see. When we write the number 25 we get it as 5 into 5 also and we can also have it as minus 5 into minus 5. तो आप देखेंगे 25 का square root of 25, it will be plus 5 also and minus 5 also. What is the square root of a number? That number which when multiplied by itself gives us this number back. और आप देखेंगे 5 को 2 times multiply करें या minus 5 को, हमें मिल तो रहा है 25. तो 25 का square root 5 भी है और minus 5 भी है. Getting the point here? Now after this step we move towards step 6. Obtain the values of x by shifting the constant term b upon 2a to RHS. ये है constant term b upon 2a. इसको जब हम RHS में shift कर देंगे तो हमें x की values मिल जाएंगी. So we get the value of x by shifting this b upon 2a. It will now become minus b and here we have plus minus under root b square minus 4ac upon 4a square. Now with this expression we will be getting the values of x which will be satisfying the equation. Let us see this method once again. Revise it. The first step is to divide the equation by the coefficient of x square, that is a. Then take this constant term to the RHS in this way. Then the important step is step number 3. You have to take the coefficient of x which is b upon a here, get its half, square it and add it on both the sides of the equation.
Then from this expression in the LHS, we will get one perfect square, and then we will be simplifying the RHS, and then take the square root on both sides, and then we will get this expression, and with this equation. From here, take this constant to the RHS, and then this is the expression which will be giving us the values of x. Now we take one example with the help of which we will understand this method much better. This is the example. Solve the equation x square plus 4x minus 5 equal to 0 by the method of completing the square. The equation is x square plus 4x minus 5 equal to 0. Now, the first step is to divide by the coefficient of x square, but here it is 1, so no need to divide by the coefficient of x square. Second step, take the constant to the RHS. It will be plus 5 now. Third step, take the coefficient of x. It is 4. Get its half. Divide by 2. It will be 2. Then square it. It's 2 square. Add this term on both sides of the equation. So we will get x square plus 4x plus 2 square, and here also 5 plus 2 square. तो हमने क्या किया, ये important step है. जो कोएफिशिएंट है x का वो है 4, उसका हाफ किया तो वो हमें मिल गया 2, और फिर हमने उसका स्क्वायर किया तो वो हो गया 2 स्क्वायर. उसको हम दोनों साइड्स में ऐड कर रहे हैं. यहाँ से हमें मिलेगा एक परफेक्ट स्क्वायर. दिस इज x स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, एंड इन बिटवीन मल्टीप्लाई दीज नंबर्स बाय 2. देखिए आप, फर्स्ट नंबर स्क्वायर, सेकेंड नंबर स्क्वायर, और आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 4x ही तो मिलेगा यहाँ से. और यहाँ है हमारे पास 5 प्लस 4, 2 स्क्वायर इज 4. यहाँ से हम लिख सकते हैं x, taking it from here, 2 take it from here, and then since it is plus we will take it plus here. So x plus 2 whole square. Getting the point here? This is equal to 9. अब हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर आ गया है, और अब हम इसकी मदद से इजीली इस इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं. हाउ टू फाइंड देम? नाउ नेक्स्ट, टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. इफ वी टेक द स्क्वायर रूट ऑन LHS, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा x प्लस 2, और यहाँ हम लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9. दिस विल गिव यू x प्लस 2 इक्वल टू प्लस एंड माइनस 3 बोथ. Square root of 9 is 3, and we will be taking both positive and negative values. Now this means that either x plus 2 is equal to plus 3 or x plus 2 is equal to minus 3. From here, x is equal to 3 minus 2, or from here x is equal to minus 3 minus 2. From here, x is equal to 1 or x is equal to minus 5. So these are the two roots of this equation which we have found by the method of completing the square. And where have we completed the square? In this step, as you can see, by adding 2 square on both sides. Getting the point here? We can write the final answer here. The roots of the equation are the roots of this equation are 1 and minus 5. Okay, and you can check your answer by placing these values in the equation given. Also, let us try to visualize all this concept, getting a complete square from this expression in the LHS, which is x square plus 4x. इस एक्सप्रेशन से हमने एक कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाया? लेट अस सी इट विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम ऑल्सो. हियर इट इज. लेट अस सी. वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 4x विद अस. दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड x units, and so this area is x into x, x square. This is a rectangle and you can see its breadth is equal to x. जितनी ये breadth है उतनी ही इसकी breadth है, और यहाँ हम इसकी लेंथ ले रहे हैं 4 यूनिट्स. तो ये एरिया हो गया 4 इंटू एक्स, दैट इज 4x. तो हमने क्या ऐड कर लिया? यहाँ से x स्क्वायर और यहाँ से ले लिया 4x. अब हम इन दोनों फिगर्स को ऐड करेंगे तो ये फिगर आपको दिखेगा. दिस इज x, और अब ये हो गया x, एंड दिस इज 4, एंड दिस इज अगेन x. सो दिस इज x स्क्वायर and this is the area 4x. We have added these two figures. Now what? Let us split this area into two equal parts.
तो ये हो गई 2 यूनिट्स लेंथ, 2 यूनिट्स, और ब्रेड्थ हमें पता है x यूनिट है, तो ये एरिया हो गया 2x, ये एरिया हो गया 2x, and this is the area x square as we know from here. Now if we cut this strip, the last strip from here, and take it at the bottom in this way, we get this figure. This is the area x square, ये है 2x, ये है 2x. Now is this a square? No, this area is missing, and just because of this area we are not getting a complete square, but we want to get a complete square, so we need to fill this area. और आप देखेंगे ये साइड है 2 यूनिट्स और ये साइड भी है 2 यूनिट्स, तो यहाँ पर एक स्मॉल स्क्वायर आना चाहिए जिसकी साइड होगी 2 यूनिट. और अब अगर हम ऐसा एक स्क्वायर ले आएँ जिसकी साइड हो 2 यूनिट, तो क्योंकि हम इसे अपने मन से ला रहे हैं तो हमें उसे साथ ही साथ माइनस भी करना होगा. अगर हम अपने मन से कोई वैल्यू लाएंगे इक्वेशन में तो उसे माइनस भी करना होता है. तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है. ये एरिया 2 यूनिट का स्क्वायर है और इसलिए हमने इसको अपने मन से ऐड किया है, तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं. दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 यूनिट्स. गेटिंग द पॉइंट. और जब हमने इसे यहाँ पर ऐड कर दिया तो हमें मिल रहा है कंप्लीट स्क्वायर. और आप देखेंगे दिस एरिया इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 2x एंड दिस इज 2x. अगर हम इन्हें मैथमेटिकली लिखें तो है हमारे पास x स्क्वायर, यहाँ पर हमारे साथ है 2 स्क्वायर और यहाँ से 2x प्लस 2x. 2 बार है तो हमने 2 बार लिख दिया. और अगर हम इसे मर्ज करें मिडिल टर्म को तो हमें क्या मिल रहा है? दिस 2x इज रिटन 2 टाइम्स, सो वी कैन राइट इट एज 2 into 2x एंड दिस इज नथिंग बट x प्लस 2 होल स्क्वायर. तो हमने इस स्क्वायर शेप से ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी लिख दिया है. तो आप दोनों तरह से सोच सकते हैं. मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया, या आप सोच सकते हैं कि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हमने एल्जेब्रिकली इस तरह से प्रेजेंट किया है. गेटिंग द पॉइंट. और अब हमारे पास यहाँ क्या बच गया? ये है एक स्क्वायर विद साइड x प्लस 2. देखिए आप, ये साइड है x और ये साइड है 2 यूनिट्स, तो टोटल हो गई ये पूरी साइड x प्लस 2 यूनिट्स. और इसी तरह से इसकी ब्रेड्थ भी हो गई x प्लस 2, तो ये एक स्क्वायर हो गया एंड इट्स एरिया इज नाउ x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, दैट इज x प्लस 2 होल स्क्वायर minus 4. In this way we are getting back this expression. So how interesting it is to connect all this with diagrams, isn't it? This is just for your understanding and I hope you will enjoy it. Next we have one more example, example number 7 from your book. Solve the equation given in example 3 by the method of completing the square. So we move back towards example 3. It is find the roots of this equation. इस इक्वेशन के रूट्स हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालने हैं. ठीक है. सो वी राइट द इक्वेशन. इट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0. फर्स्ट स्टेप, डिवाइड द इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. और वो यहाँ क्या है? इट इज 2. सो लेट अस डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2. फर्स्ट टर्म विल बी x स्क्वायर इटसेल्फ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. देन वी हैव माइनस 5 बाय 2x plus 3 by 2 equal to 0 upon 2 will be 0, so a 0 here. Second step, take this constant to the RHS. तो हमारे पास बचेगा x square minus 5 by 2x equal to minus 3 by 2. Then the important step, take the coefficient of x. It is 5 by 2. इसका हाफ करेंगे. कैसे? Take 1 2 in the denominator. दिस विल बिकम 5 by 4 और फिर हम इसका करेंगे स्क्वायर. और अब इस टर्म को दोनों साइड्स में ऐड करना है. सो वी एड इट. एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 2x प्लस 5 by 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 by 4 होल स्क्वायर माइनस 3 by 2. इसको हमने LHS और RHS दोनों में ऐड कर दिया है. नाउ जस्ट हैव अ लुक. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 by 4 होल स्क्वायर. और अब अगर हम
इन दोनों ही नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू एक्स इंटू 5/4, तो क्या हमें ये मिडिल टर्म मिल रही है ऊपर वाली? तो आप देखेंगे 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यही टर्म मिल जाएगी ऊपर वाली हमें। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक कंप्लीट स्क्वायर हमें दे रहा है। और यहाँ तो हम RHS में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इट विल बी 25/16 माइनस 3/2। नेक्स्ट फ्रॉम हियर वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। x यहाँ से 5/4 और क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ बीच में आएगा माइनस एंड देन अ स्क्वायर। और यहाँ पर LCM लेंगे, इट विल बी 16, 25 in the numerator, then minus, it's 2 8s are 16, so 8 3s are 24. From here we get x minus 5/4 whole square equal to 1/16. So we have simplified the RHS. अब हमें स्क्वायर रूट लेना होगा दोनों साइड्स में, तो हम लेंगे x minus 5/4, स्क्वायर रूट करने पर ये स्क्वायर हट जाएगा, कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों ही आपस में इन्वर्स ऑपरेशंस हैं। तो यहाँ बचेगा x minus 5/4 और यहाँ हम लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1/16, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। दिस विल गिव अस x minus 5/4 equal to plus minus 1/4. Square root of 1 is 1 and square root of 16 is 4. Now this implies that x minus 5/4 it is equal to plus 1/4 or x minus 5/4 is equal to minus 1/4. या तो ये plus 1/4 के इक्वल होगा या फिर minus 1/4 के, और यहाँ से हमें x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। x equal to 1/4 plus 5/4 और x equal to minus 1/4 plus 5/4. Simplify, you will get it LCM as 4 and in the numerator we will get 6. This will be equal to 3/2 or x is equal to, again the LCM is 4, minus 1 plus 5. This is 4/4 equal to 1. Therefore, the roots of the equation are 3/2 and 1. Okay, now there is one more approach by which we can solve this equation by the method of completing the square. The equation is 2x square minus 5x plus 3 equal to 0. एक और तरह से भी हम इसे अप्रोच कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप, यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, तो 2 से डिवाइड करने की जगह अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है, देखते हैं एक बार। मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 2, देखिए it will become 4x square minus 2 into 5 10x plus 3 2s are 6 and 0 into 2 is 0. अब आप देखिए इस टर्म को, इसे हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक स्क्वायर टर्म मिल रही है, इसीलिए हमने इस इक्वेशन को इस x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया। हमारा पर्पस है कि ये जो टर्म है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और वो जब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। Now, send this constant term to the RHS. 4x square minus 10x equal to minus 6. Now it can be written as 2x whole square. This is a square. If we compare it with the algebraic identity, then minus 2 into a, it is 2x. And now I need some expression here. 2ab. What should be b here in this case? तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम लेते हैं 5 तो हमें मिलेगा 5 2s are 10 into 2, तो ये 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए हम 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो अब ये जो b एक्सप्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 5/2। तो आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और रिमेनिंग वी विल बी हैविंग 10x। तो अब जो नेक्स्ट स्क्वायर हमें लेना है वो होना चाहिए 5/2 whole square. So multiply it by 5/2, add 5/2 whole square,
in the LHS as well as in the RHS. Now we are getting a complete square. 2x from here, 5 by 2 from here, and in between minus whole square equal to minus 6 plus 25 by 4. Simplify it, you will get it 4 in the denominator, and here minus 24 plus 25. This will be equal to 1 by 4. Now taking the square root on both sides, we will be getting a simplified form. ये बचेगा 2x minus 5 by 2 on taking the square root, and here we will be having 1 upon 2 plus minus. Square root of 1 is 1, square root of 4 is 2. Now 2x minus 5 by 2, this is equal to plus 1 by 2, or 2x minus 5 by 2, it is equal to minus 1 by 2. From here 2x is equal to 1 by 2 plus 5 by 2, or 2x is equal to minus 1 by 2 plus 5 by 2. Again on solving it, we get 2x equal to, this will be 6 upon 2, that is 3, or 2x equal to, here we will have 4 upon 2, that is 2. Now x will be either 3 by 2 or x will be either 2 by 2, that is 1. So we are getting the same answers. तो ये एक और अप्रोच है जहाँ पर हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ले रहे हैं लेकिन उससे डिवाइड ना करके उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो यू कैन टेक एनी ऑफ द टू मेथड्स. वी डू वन मोर एग्जाम्पल. Find the roots of the equation, this one, by the method of completing the square. So the equation is 5x square minus 6x minus 2 equal to 0. First step, dividing the equation by coefficient of x square, that is 5. Dividing the equation by 5, we get x square here minus 6 upon 5x minus 2 by 5 equal to 0. Next, take the constant term to the RHS. This will be equal to plus 2 by 5. Now, take the coefficient of x. It is 6 by 5. इसका हाफ करिए, divide by 2. You will get it 3 by 5. देखिए 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा और अब इसका स्क्वायर करेंगे और इसको हम ऐड करेंगे दोनों साइड्स में. So, x square minus 6 by 5x plus 3 by 5 whole square equal to 2 by 5 plus 3 by 5 whole square. आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मिडिल टर्म हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को. तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर है 3 by 5 होल स्क्वायर और बीच में दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 2 into x into 3 by 5. And this is same as 6 by 5x. So this is getting a complete square. यहाँ मिलेगा 2 by 5 plus 9 by 25. Now x from here, 3 by 5 from here, and this is minus, so take a minus, complete the square, and here we will have 25. 5 5s are, so 5 2s are 10 plus 9. This is 19 upon 25. Now take the square root, x minus 3 by 5, this is equal to square root of 19 and square root of 25 is 5, and we will be taking both the values plus and minus. यहाँ से take the constant to the RHS, x will be equal to 3 by 5 plus minus root 19 upon 5. If we take the LCM as 5, this will be 3 plus minus root 19, and these are the roots of this quadratic equation. So we can write, therefore the roots of this equation are 3 plus root 19 upon 5, ये हो गया पहला root, and 3 minus root 19 upon 5. This is the second one. Okay, next we have one more example. Find the roots of this equation by the method of completing the square. So it is 4x square plus 3x plus 5 equal to 0. तो हम पहले डिवाइड करेंगे x square के कोएफिशिएंट से, which is 4 here.
we will get x square plus 3 by 4x plus 5 by 4 equal to 0. Take this constant to the RHS, we will get x square plus 3 by 4x equal to minus 5 by 4. Now take this coefficient of x, it is 3 by 4. इसका हाफ करेंगे, डिवाइड बाय 2, वी विल गेट इट 3 बाय 8 और फिर इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों साइड इसको ऐड करेंगे. सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय 4x प्लस 3 बाय 8 होल स्क्वायर equal to minus 5 by 4 plus 3 by 8 whole square. Okay. Now we get a complete square from this left hand side. Take x, take 3 by 8. In between यहाँ plus है तो plus रहेगा. Whole square. This is equal to minus 5 by 4 plus 9 upon 64. Okay. Now we have to simplify this RHS and get a suitable expression. Take the LCM as 64. 4 into 16 is 64 and 16 5s is 80. So it will be minus 80 plus 9 here, and here we have x plus 3 by 8 whole square. Again x plus 3 by 8 whole square. This is equal to now minus 71 by 64. But here what do we see? We are getting this square in the LHS and a negative value in the RHS. और आप जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है. आप कोई भी नंबर लीजिए, 6 लेंगे उसका स्क्वायर 36, माइनस 6 लेंगे तो इसका स्क्वायर भी तो प्लस होगा 36. तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है और यहाँ पर तो ये स्क्वायर नेगेटिव मिल रहा है. सो देयर इज सम एरर हियर, एंड व्हाट इज इट? There are no real roots of this equation given in the question. इस equation के कोई real roots नहीं है क्योंकि x की हम कोई भी वैल्यू ले लें उसका स्क्वायर नेगेटिव कभी नहीं हो सकता. और ऐसे केस में इस equation के imaginary roots होंगे जो आप पढ़ेंगे अपनी हायर क्लासेस में. So for here we will take this expression x plus 3 by 8 whole square. This expression cannot be negative for any real value of x, and so there is no real value of x satisfying the given equation, and therefore the given equation has no real roots. Getting the point here? So these were some examples. Today we learned how to solve a quadratic equation by the method of completing the square. I hope it is clear to you and I hope you enjoyed the class. Soon we will meet again. Till then, goodbye and practice these questions.